Hello children. So today we are going to discuss about the second part of cell, that is mainly the cell structure. In the previous video we have discussed about the basic concepts of cells and introduction of the cell. So let us start, and if you like this video then please like and share it and subscribe to my channel for more videos. So the structure of cell mainly have three parts. The basic structure of cell has cell membrane, or we can say it plasma membrane, and inside it there is a nucleus, and in between the nucleus and plasma membrane there is cytoplasm, which contain cell organelles which have different functions in the cell. So basically cell is divided in three parts: cell membrane, cytoplasm, and cell organelles or its content, and nucleus. But in some cases, like in bacteria, fungi, plants, they have cell wall as the outermost layer. So now first of all let us discuss about cell membrane. Cell membrane is the outermost covering of the cell that separate the content of cell from its external environment. Means it is the barrier between the cell and the external environment. It is thin, living, delicate, elastic, and selectively permeable. This word is very important. Selectively permeable means it allow only some substances to move in and out of the cell. मीन्स सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकता, ना ही कोई भी सब्सटेंस बाहर जा सकता है, बिकॉज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल. कुछ ही सब्सटेंसेस जो सेलेक्टेड सब्सटेंसेस हैं वो इन एंड आउट हो सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल and it is made up of mainly lipids and proteins. Lipid means fats. Now the functions of plasma membrane are: plasma membrane permits the entry and exit of some substances or materials in the cell. It also prevents the movement of some substances. So means it is selectively permeable. Selectively means selected चीज़ें अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं. ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है अंदर आ सकता है या कुछ भी जो है सेल से बाहर जा सकता है. जिस सब्सटेंस को, जिस मटेरियल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी वही एंटर या एग्जिट हो सकता है. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और जो ये ट्रांसपोर्ट है, द सब्सटेंसेस कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय टू प्रोसेसेस. वन इज़ डिफ्यूजन एंड सेकेंड वन इज़ ओस्मोसिस. डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजन. Diffusion is the spontaneous movement of substances from a region of high concentration to low concentration. And to explain this, we can have an example of ink. If we put some drops of ink in the water, then suddenly they spread in whole of the water. Why? Because the concentration of ink is very less in different parts of water. So it tends to spread in the whole water. And one more example we can take. जब हम घर में पूजा करते हैं उस टाइम पर जो इंसेंस स्टिक है, मीन्स अगरबत्ती या धूप बत्ती, उसकी जो स्मेल होती है इट स्प्रेड इन होल ऑफ द हाउस. सो this is also an example of diffusion. Means the particles of air, smell or the fragrance will spread in whole of the house. So one more example is movement of carbon dioxide and oxygen during respiration. This also happens by the diffusion. Now let us discuss about osmosis. Osmosis is the movement of water molecule. Please remember here,
water molecule, it is the movement of water molecules through a selectively permeable membrane. Difference is there in osmosis and diffusion. The main difference is in osmosis there is movement of water molecules only, but in diffusion we learn that there is the spontaneous movement of particles. And osmosis take place through selectively permeable membrane, but in diffusion this membrane is not required. And it is the movement of water molecules. Osmosis is the movement of water molecules through a selectively permeable membrane from a region of high water concentration to low water concentration. And there are three types of solutions, and if we talk about the osmosis, it is of two types, endosmosis and exosmosis. So for discussing the types of osmosis, we should first know the types of solution. So the first type of solution is isotonic. Isotonic का मतलब होता है जिसके अंदर, सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन पता होना चाहिए आपको. सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है. सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड जिसके अंदर हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं. सपोज हम वाटर के अंदर अगर शुगर को ऐड कर रहे हैं तो शुगर इज़ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, वाटर. सो सॉल्यूशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है. क्लियर? सो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक एंड हाइपर मीन्स मोर. हाइपरटोनिक, सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक. In hypertonic solution the concentration of water is less. You can see the blue color circles or particles very less, and yellow color particles means solute is more. So it is hypertonic solution, means the hypertonic solution contain more solute than the solvent. But in case of hypotonic solution it is mainly dilute solution which contain more solvent and very less amount of solute. Means water ज़्यादा होगा और जो solute है either it can be salt, it can be sugar, anything it can be, and solvent will be more and solute will be less. So it is called hypotonic solution. So iso means same, hyper means more, and hypo means less. Now we will see the effect of these solution on the cell. If we put a cell in hypotonic solution, अब hypotonic solution में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या होगा, जो वाटर होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, एंड दिस इज़ नोन एज एंडोस्मोसिस. हम इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस. ओके. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑन बोथ द साइड देयर इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, सो देयर विल बी नो change in the cell. But in case of hypertonic solution, when water is very less inside the solution, means the solution is hypertonic, so it contain very less water. पानी जो है सॉल्यूशन में कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल में से वाटर बाहर निकलेगा जिसको हम प्लाज्मोलिसिस या श्रिंकेज बोलते हैं सेल की. तो सेल विल श्रिंक. हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस हुआ और हाइपरटोनिक में होगा एक्सओस्मोसिस. इसकी एक्सप्लेनेशन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड. देयर इट इज. Explanation is, if the medium surrounding the cell has high water concentration than the cell, that is if the solution is very dilute solution, the cell will gain water by osmosis, and this type of solution is known as hypotonic solution. मतलब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है? वी विल डिसाइड इट बाय द रेफरेंस ऑफ द सेल. जो सेल हमने उसमें रखा है उसके रेफरेंस से हम देखेंगे इज इट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फॉर द सेल. नाउ वाटर मूव molecule will pass across the plasma membrane in both the direction, but more water molecule will enter the cell than will leave, and the cell will swell up. मतलब उसका साइज़ बढ़ जाएगा. कभी कभी क्या होता है, साइज़ बढ़ने के साथ साथ इट कैन रप्चर ऑल्सो. ओके,
जिसको हम लाइसिस भी बोलते हैं. Now, next is isotonic solution. If the medium surrounding the cell is exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of the water across the plasma membrane, which results in no change in the size of the cell. जब दोनों तरफ equal concentration होगी water की, तो there will be no exchange, or we can say there is no movement of water will take place, and this is called isotonic solution. लेकिन if the medium is hypertonic, means if the medium has very less concentration of water than the cell, then it is known as concentrated solution, and due to this the water will be loose by the cell. This is called exosmosis, and the solution is called hypertonic solution. In this case too, water crosses the plasma membrane in both the direction, but this time more water leaves the cell than enter it, and the cell will therefore shrink or reduce the volume. This is known as exosmosis. Clear? Thank you children for watching this video.